Welcome back. As promised in the last video, that the next video will also be on the drug addiction. So here I am with the most important questions on drug addiction. Here the first question says, what is the primary goal of drug addiction policies and acts? ड्रग एडिक्शन पॉलिसीज़ एंड एक्ट्स जो है उनका प्राइमरी गोल क्या है? तो उनका प्राइमरी गोल है ऑप्शन नंबर बी, दैट्स प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ ड्रग एडिक्शन। ड्रग एडिक्शन पॉलिसीज़ एंड एक्ट्स जो है उनका प्राइमरी एम ही होता है कि वो ड्रग एब्यूज़ वालों को प्रिवेंट करे और उनके लिए ट्रीटमेंट प्रोवाइड करे, उनको सपोर्ट करे, उन इंडिविजुअल्स को जो ड्रग एडिक्शन से स्ट्रगल कर रहे हैं। सो आंसर इज़ प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ ड्रग एडिक्शन। Question number 2 says, which of the following is a common feature of drug addiction legislation? Drug addiction legislation जो है उनका common feature क्या है? ठीक, so here the right answer is option number C, that is establishment of rehabilitation programs. बहुत सारे drug addiction laws इंक्लूड करते हैं प्रोविजंस फॉर इस्टेब्लिशिंग द रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स सो दैट वो इंडिविजुअल्स को हेल्प करे, उनको हेल्प करे रिकवर करने में जो ड्रग एडिक्ट हैं। Question number 3 says, what aspect of drug addiction typically addressed by policies and acts? कौन सा aspect drug addiction का that is typically addressed by the policies and acts? ठीक, यहाँ पे जो हम options देख रहे हैं like prevention, treatment, law enforcement, तो ये तीनों aspects जो है एड्रेस होती है बाय पॉलिसीज़ एंड एक्ट्स से। ठीक है, तो ये तीनों ठीक है। तो हेयर द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 4 सेज, which approach is increasingly emphasized in modern drug addiction policies? ठीक, तो here the right answer is option number B, that is harm reduction. मॉडर्न ड्रग एडिक्शन पॉलिसीज़ जो है दे प्रायोरिटाइज हार्म रिडक्शन अप्रोच, जो फोकस करती है जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ड्रग है उनको कम करने की, उनको मिनिमाइज करने की, रादर दैन सोली पनिशिंग द ऑफेंडर्स। ठीक, सो हार्म रिडक्शन इज़ द राइट आंसर because this is the approach which is increasingly emphasized in modern drug addiction policies. Next question says, what is the purpose of incorporating harm reduction into the drug addiction policies? Here the right answer is option number B, that is to reduce the spread of infectious diseases. ठीक, हार्म रिडक्शन स्ट्रैटेजीज़ जो है उनकी एम ही होती है वो मिटिगेट करे स्प्रेड ऑफ डिजीज़ लाइक HIV, एड्स है, हेपेटाइटिस है अमंग द ड्रग यूज़र्स, सो दैट वो उनको प्रोवाइड करे लाइक क्लीन नीडल्स उनको प्रोवाइड करे एंड उनके लिए एक्सेस टू हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करे। ठीक, इसीलिए हम कहते हैं कि जो पर्पस है ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग द हार्म रिडक्शन इनटू ड्रग एडिक्शन पॉलिसीज़ वो है सो दैट टू रिड्यूस द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़, सो दैट जो बीमारियां हैं इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं वो न फैल जाएं। क्वेश्चन नंबर 6 सेज, which organization often plays a role in the development and implementation of drug addiction policies? ठीक, here the right answer is option number A, that's World Health Organization, WHO. WHO जो है it's often involved in shaping the global health policies, including those related to drug addiction prevention as well as treatment. So WHO is the right answer. Question number 7 says, what is the purpose of implementing drug addiction policies at international level? ठीक, अब यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल की बात हो रही है, तो हेयर द राइट आंसर इज़ ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ टू फैसिलिटेट cooperation and collaboration among the countries. ठीक, इंटरनेशनल ड्रग एडिक्शन पॉलिसीज़ जो है उनकी एम ही होती है इनक्रेज करना cooperation among the students to address the drug trafficking, to address the prevention as well as treatment, but on a large scale, on a global scale. Next question says, which of the following is a common component of drug addiction prevention and strategies? ठीक, इनमें से कौन सा कॉमन कंपोनेंट है ड्रग एडिक्शन प्रिवेंशन स्ट्रैटेजीज़ का? हेयर द राइट आंसर इज़ ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ एजुकेशन एंड अवेयरनेस प्रोग्राम्स। एजुकेशन एंड अवेयरनेस प्रोग्राम्स बहुत ही क्रूशल है एज फार एज द ड्रग अब्यूज़ इज़ कंसर्न्ड।
ठीक, क्योंकि प्रिवेंशन स्ट्रैटेजीज वो ऑफन इंक्लूड करती है एजुकेशनल इनिशिएटिव्स दैट आर एम्ड एट इन्फॉर्मिंग द पब्लिक अबाउट द रिस्क्स ऑफ ड्रग अब्यूज़ एंड प्रमोटिंग द हेल्दी लाइफ स्टाइल्स। सो इसीलिए एजुकेशन और अवेयरनेस का होना बहुत ज़रूरी है। Question number 9 says, what role do non-governmental organizations, that is NGOs, typically play in the drug addiction policies and acts? ठीक, here the right answer is option number B, advocacy for policy change। ठीक, NGOs जो है दे ऑफन एडवोकेट फॉर चेंज इन ड्रग एडिक्शन पॉलिसीज़, और वो सपोर्ट करती है उन इंडिविजुअल्स को जो अफेक्ट हुए होते हैं ड्रग से, और वो कंट्रीब्यूट करती है टू प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट एफर्ट्स। ठीक, question number 10, and it is the last question. This says, which factor is essential for the success of drug addiction policies and acts? Here the right answer is option number C, that is educate funding and resources। educate funding and resources जो है वो भी crucial है for implementing the effective prevention, for implementing the treatment and harm reduction program strategies also to prevent the drug addiction, right? So these were the very important questions regarding drug addiction. Thank you for watching and stay tuned to the channel.